in India. The International Day of Yoga has been celebrated annually on 21st June since 2015. Theme of our International Yoga Day 2020 is Yoga at Home and Yoga with Family. In the present scenario, against the backdrop of COVID-19 pandemic, a fear and stress, yoga is a powerful tool to deal with the stress, isolation, and helps maintaining physical well-being. It's my duty and privilege to welcome today's resource person, Ms. Pratima Prasad. She did her master degree as well as an MPhil in yoga and pursuing PhD in yoga. She's a good resource person not only for the school or college, but all our educational institutions. She's a very good instructor, resource person, and very practical knowledge. On this auspicious occasion, I specially invite for this our resource person Pratima Prasad for this national online workshop. More than that, I am really privileged to welcome each one of you. It's a good platform to think and stand for unity as well as fight against this pandemic. Yes, my dear friends, we will work together, we'll stand together, we will go forward. Pandemic is not a danger or stress, but rather with a mental power, mental capacity, we can conquer and go forward. I wish you all the best. God bless you. So I welcome Pratima Prasad. Take care and guide each one of us. Thank you. Thank you very much. Yes, Pratima. Thank you, Father Johnson, and entire team of Christ College for giving me this platform to speak up. And before I go ahead, I would like to just surrender my knowledge to Yoga Guru Lord Shiva, and of course my Yoga Guru Swami Niranjananda Saraswati, Bihar School of Yoga, Munger, Bihar, from where I have learned the knowledge. Without spending any much of time, I would like to just share my screen for some of the things that I have compiled for you. Just give me some time. Okay. So, friends, first of all, wishing you happy 6th International Day of Yoga 2020. And as Father said, that today's theme of workshop is Yoga at Home, Yoga with Family. So, you all know that this line has great significance today. आज के परिवेश में इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, because we are just confined to one place, to one house or one room sometimes. So let us see how we should go ahead with the practices. First, I would like to just give you the module of 3 days webinar. हम इन 3 दिनों में क्या-क्या करने वाले हैं. So first of all, I have for first day introduction to COVID
COVID-19 and yoga, and we are going to just have a brief discussion on how yoga combats COVID-19. कैसे लड़ाई करता है, कैसे हमें COVID-19 से योगा बाहर निकालने में सहायता करता है. Second day will be more of practical, and we are going to deal with yoga practices and program that would emphasize on shatkarmas, asanas and pranayamas. So you are well aware of two words, asanas and pranayamas. Shatkarmas, of course, those who are associated with some or the other way with yoga must have known. And these three things, of course, have a lot to do with fighting with the COVID-19. On 26th, we have yoga practices and programs that emphasize on dharana and dhyana. So both theory and practical. So these 2 days, if you wish, you can bring your yoga mat and you can sit with yoga mat, and let's see how we can go ahead on screen. Yes. So we are all aware of what COVID-19 is, and I'm not going to go in much detail of it. So just to tell you in one line, coronavirus, COVID-19 is an infectious disease caused by newly discovered coronavirus. Okay, so we are well aware of this term, and even the tiny tots know this term very well. So we move ahead. Only thing is that this disease is so infectious that it also takes toll on our lives. How it goes, let's see. So some of the symptoms you must be knowing also, but I have compiled especially those symptoms which I will be taking up during my yoga practices. And almost all we start with, first symptom is sore throat. आपको गले में थोड़ी सी खराश होने लग जाती है. Sorry to interrupt you, ma'am. Kindly unmute you. Hello. Pratima, ma'am. Pratima ma'am, please unmute your mic. I think you have muted. Pratima ma'am, you have muted, I think. Pratima ma'am, you have muted, I think. We are not audible to you. डायरिया भी एक सिम्टम है उसमें, कोविड की लॉस ऑफ टेस्ट, देखो, और स्मेल, रैश स्किन में, बोले थे ना, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर और टोज, कलर. All the participants, please mute yourself. सब तो पूरा ही अफेक्ट हो रहा है. डायरिया तो अपन क्या बोलेंगे, मसाला वसाला खाएंगे, पेट खराब बोलेंगे. सभी है उसमें तो, और क्या लिखना. मेंटल लोनलीनेस,
ಅದು ಯಾರೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಬಂದೆ 9 ಗಂಟೆ ಅವರಿಯಾ ಈ ಕಡೆ அவன் சார் யார் எக்ஸ்ட்ராத்தில் கொடுக்குற பத்துக்கு அதில் வரேன்டா சரி அப்படியே குட்டயத்தில் கொடுக்க சொல்லி வாங்கிட்டு வரும் குட்டயத்தை வர வச்சு காட்டு தனியா போக்குற கூட Am I audible? Yes, now you're audible. Now you're audible. அது குட்டயத்தில் இருக்கு Now you're audible. It's okay. It's okay. Continue. வாங்கிட்டா எவ்வளவு சர்டிபிகேட் வச்சு 50 லட்சம் வரை எடுத்து போயிடும் தெரியாது. Unmute yourself. Unmute yourself. You muted yourself again. Unmute your mic. Pratima madam, unmute your mic, please. Yes, this is okay. Is it okay, sir? Now it's okay. Is it okay, sir? சரியா இது Now it's audible. Yeah, please continue. So whatever I said, were you able to listen till now? No, but no. Okay. Ma'am, please repeat what you have tell, because at that time when you were speaking, your mic was unmute. I'm sorry. Okay, I'm so So sorry. speak it again. Okay. Let me just give the brief. Okay, so what I have said about, let me just give a brief. That we are going to have 3 days webinar, and in that the module is that first day today we are going to have a brief discussion on yoga practices and introduction to COVID-19. Okay, second day we will be dealing with yoga practices, the asanas and pranayamas. That will be both theory and practical, and if you want to have your yoga mat along with you can just have it. Okay, next third day will be practices and program emphasizing on dharana and dhyana. So these were the 3 lines which we are going to have as a module for 3 days webinar. Okay, now next, what COVID-19 is, we all know, and that's all, that it's an infectious disease and it is caused by coronavirus. Third is I was just dealing with physical and physiological symptoms. Like when a patient, like कोई इंसान अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाता है, जो इनिशियल सिम्टम है वो है हल्की सी गले में खराश या ड्राई कफिंग होता है या श्वास लेने में कठिनाई होती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है. तो जैसे जैसे केसेस एडवांस होते जाते हैं, ऐसा होता है कि आपको आपके चेस्ट में प्रेशर और पेन भी आता है, थकावट सी लगती है, सिर में दर्द रहता है और बॉडी पेन भी रहता है, बुखार भी रहता है. फिर आती है मोर एडवांस स्टेज. वो तो जब शुरुआती दौर है तब ये चीजें हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे योग इन चीजों पर मदद करता है. नेक्स्ट इज जब केसेस एडवांस हो जाते हैं, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस और स्वाद में कमी आना, यू डोंट हैव द स्मेल और इवन यू लूज द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. Rashes on skin is there, and there is discoloration of fingers and toes. रंग जो हमारे नॉर्मल नाखून के और स्किन के हैं वो भी हटने लग जाते हैं, जो नॉर्मल है उससे कलर उसका चेंज होने लग जाता है. एंड देयर इज लॉस ऑफ स्पीच ऑल्सो. आपको कुछ भी बोलने में आपको कठिनाई होती है, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक इवन. फिर मेंटल सिम्टम, ऑफ कोर्स जो आज का परिवेश है, व्हाटएवर वी आर with these days, I remember never it had before. Okay, in my whole life, and of course those who are aged also, they also say nahi aisa kabhi dekha nahi, suna nahi. So definitely man is a social animal, hai na? So in that case, when we are said to know you get confined to one room or get confined to one house, it's really difficult. But anyhow we have to cope with it. In that condition there is एकाकीपन यानी लोनलीनेस आने लग जाता है, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ने लग गया है, और खासतौर पे जो हम कई जगह पे काम छूट गया है, और कई जगह पे इवन द सैलरीज एंड वेजेस हैव कट टू शॉर्ट, आई मीन टू हाफ. तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो रही है, हमें एक निराशा की तरफ लेके जा रही है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है. तो हम
we are not able to cope up with whatever is happening. Definitely yoga is going to help in these conditions. आपको बहुत मदद मिलेगा कि कैसे you could be positive in these days. So let us come to what yoga is all about. पहले हम उसके meaning को जानते हैं, and you must be knowing also. Let me just summarize that yoga come from the root word yuj. ठीक है, युज धातु से आता है, and it only mean union. But then this word union has a large sense. So when we talk of union, it can be union to body and breath. You feel also how that union takes place. Next, mind and emotion. You get united with your mind. अपने मन से आप connect होते हैं. You start looking into yourself कि आप क्या हैं और जो चीजें हो रही हैं उसको आप कैसे tackle up कर सकते हैं. And of course, a large perspective, if we see, ये हमें हमारे individual consciousness को universal consciousness के साथ unite करता है. हमें आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है. ये हमें बहुत लंबे समय के योग प्रैक्टिस से आता है. Now let us see one thing which I always try to tell, that whenever we talk of yoga, we only talk of asanas and pranayamas. आपको मैं बता दूं, आसन प्राणायाम are only the two steps or only the two limbs of yoga. बस दो आयाम हैं. You can see on the screen that there are others like yamas are there, niyamas are there, asanas are there, pranayamas are there, pratyaharas are there, dharana, dhyan and samadhis are there. Okay, तो ये चीजें जो हैं सिर्फ you can see only two we are mostly talking about, and at the most हम ध्यान के बारे में बात करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि योग सिर्फ आसन प्राणायाम या ध्यान नहीं है. योग सबसे पहले यम और नियम के बारे में बात करता है. And you know, yamas are social code of conduct. हम अपने समाज में कैसे रहें. आज हम ये देख रहे हैं कि हमें कन्फाइंड होना पड़ रहा है एक प्लेस पर ये योग इन चीजों के बारे में बहुत पहले से चर्चा करता आ रहा है कि कभी ना कभी you have to do this sort of fasting आपको करना है या आपको अपने को अलग करना है. और ये कैसे करेंगे? Let us see the different thing. So you can see what yamas and niyamas are, and these are few things which we need in today's life very much. Okay, सबसे पहले सत्य. Okay, yoga सबसे पहले बात करता है. It tells about how we should be speaking truth. है ना, हम जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए we have to talk more and more lie. तो हम उसको कैसे practice करें? So yoga also talks about being true to oneself and being true to others. Next is ahimsa, that is non-violence. So non-violence doesn't mean कि you किसी को मारा और पीटा. No, non-violence also mean that you do not harm others in one way or even with your action or with your words. Sometimes it happens that you can't help, but then that shouldn't happen knowingly. I mean to say, unknowingly होता है, हम कुछ कहते हैं और किसी को कष्ट होता है, that is separate thing. But knowingly हमें जानबूझकर किसी को we should avoid this and we should observe ahimsa, that is non-violence. Asteya is honesty. Okay, be truth to oneself. Again, ईमानदारी जिसको हम बोलते हैं, honesty जो हम बोलते हैं, अपरिग्रह. So many times we are so much engrossed in compiling things. हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो जाता है, then we think of buying one more and then one more. So yoga says have aparigraha. Whatever you need, you will get and you are able to achieve. Then why have hunger for so many things which may or may not be helpful to you? So yoga talks of aparigraha, non-attachment. You have so many things but you don't feel proud. इतने भी हम गर्व का महसूस हम नहीं करते, अरे हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ऐसा, हमारा बेटा ऐसा इतने जगह काम कर रहा है. And sometimes it happens, even those things जो जिसके पर आपका गर्व है, वो चीज ही आपके लिए आगे चल के हानिकारक हो जाता है. So let us observe aparigraha. Brahmacharya doesn't mean that you don't have to marry. No,
not basic only, so it has to be in भाव of Brahma. हम जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे higher consciousness है, जिसमें हमारा विश्वास है, so we observe brahmacharya, be in the power of Brahma. So these are all social code of conduct. Then we come to individual code of conduct, that is which are built for our own self, personal code of conduct. तो सबसे पहले शौच, and you see शौच का कितना ज्यादा काम आज के परिवेश में हो रहा है, कितनी ज्यादा हम सफाई पर ध्यान दें. So personal hygiene as well as social hygiene. We Indians are having the personal hygiene. हम बिना नहाए खाते नहीं है, that's very good. But when we come to social hygiene, yes, we do lack our temperament in that. क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है कि हम एक चिप्स का रैपर को ऐसे फेंकते हुए आगे बढ़ जाए. So somehow now see social code of conduct, Socha is also very much important. Santosh, whatever we get, we are content in that. Of course, we will work for something more and more, but then that contentment is also very necessary. Tapa. Tapa is what you like, what we observe our own personality. हम जो है अपनी personality में जो हमारी कुरीतियां हैं, negativities है, उसको दूर करने के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो that can also be counted as tapa. Work on reducing the negativities of one personality, and in higher sense we can also move on to जैसे हम fasting करते हैं और ध्यान करते हैं, that all comes in tapa. Swadhyay, daily we should be reading up. I remember when I was working in one of the school, there we used to go and we were asked to read the positive quotes written on the inner box. We used to go and pick up, and जब भी हम उसको पिकअप करते थे दिन भर ऐसा लगता था और पढ़ते थे और दिन भर हम उन बातों का ही भाव मन में रहता था. So this is also one way of doing स्वाध्याय. आपको टाइम नहीं है, आप अच्छी पॉजिटिव किताबें नहीं पढ़ पाते, at least read one positive line, and that also helps you to be motivated. ईश्वर प्रणिधान हम में से बहुत करते हैं. It means prayer to God and surrender to God. यमा नियमा आज के परिवेश में बहुत जरूरी है, because we have to like fight with COVID-19 and win also the race. Now let's see how yoga helping managing diseases. So we have 3 levels of management. First is preventive level, curative level, and rehabilitative level. Let us come to therapeutic aspect now. Preventive level में है हम योग करें और हम बीमार नहीं पड़े. हम तो we have wide range of asanas and pranayamas for it. Okay, then we have curative level. It means अगर बीमारी हो जाती है तब हमें क्या क्या करना है. And then there is rehabilitative level कि जब आपको अगर ये बीमारी से आप जब हट भी जाते हैं, जब आप तब फिर क्या होता है कि आप उसके बाद भी कई बार आप मेंटली बहुत एंशियस रहते हैं. ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर आप बीमारी की वजह से कई बार इतने कमजोर हो जाते हैं तो आपको लगता है ये सब क्यों हो रहा है मेरे. सो रिहैबिलिटेटिव केसेस में भी योग का बहुत बड़ा योगदान है. सो 3 levels are there, and we will be working on these levels when we are talking about the yoga program. So how yoga helps in fighting up the back to this. हमने अभी बताया कि योग से योगा इज लाइक कोरोना इज लाइक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, इजंट इट. सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है, वर्क करता है, और उसको पहले पकड़ता है कोरोना वायरस. उसके बाद धीरे धीरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर आता है. तो सबसे पहले जैसे पल्मोनरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम नोज इटसेल्फ. अगर आपने रेस्पिरेशन की या रेस्पिरेटरी पैसेज को देखा हुआ तो सो इट स्टार्ट फ्रॉम नोज इटसेल्फ. सो हाउ योगा इज गोइंग टू क्योर, वी विल डील विद दैट. देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें कहाँ रिड्यूस करता है पेन को, थकावट को कैसे करता है, वी विल डील विद दैट. एंड देन कार्डियोवास्कुलर फंक्शन आल्सो. And definitely yoga has lot to do with mental aspect, and in my whole of my practice session as well as my instruction I have seen अगर कुछ पे कमी आती है सबसे पहले वो है anxiety, stress, और जो मन के जो negativities हैं वो योग से बहुत जल्दी दूर होता है. और दूसरी चीज है
अगर हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, और मेरा जो यहाँ पे PHL भोपाल कस्तूरबा हॉस्पिटल में अगर जो काम हुआ था, we had a lot of research work in few of the diseases. I would like to mention asthma, bronchitis, and then we had it on hypertension, diabetes, and then it was also on pregnancy, and it was hyperlipidemia पर था, cervical spondylitis पर था. इन सब से जो मैंने experience लिया है वो ये है कि योग का अगर सबसे पहले पड़ता है वो है हमारा respiratory system. तो सबसे पहले जो हम रेस्पिरेशन पे ही काम करेंगे, एंड वी विल सी हाउ. Of course, there are few things more that will come side by side. You will feel energetic and you will feel more equanimous and positive. Then, yes, the last thing that I would like to say, the principle, yes, prevention is better than cure. जब हम बात करते हैं योग की, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिजीज की एंड ऑफ कोर्स कोविड-19 की, तो हमें प्रिवेंशन की बात पहले करनी है कि हम पहले अपना बचाव करें. अरे हम बीमार ही क्यों पड़े, चाहे हम योग करके करें, चाहे पर्सनल एंड सोशल हाइजीन को मेंटेन करते हुए करें. लिसन टू योर बॉडी. इफ समथिंग हैपेंस, आपको कई बार हम अपने बीमारी को टालते चले जाते, अरे ठीक हो जाएगा, अरे. सो फर्स्ट लिसन टू योर बॉडी. आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड Philomena Sophie. She was with me in my yoga course, and she always used to say, Pratima, शरीर जब बीमार पड़ता है तो उसके पहले से ही वो बताना शुरू करता है कि जो है तुम अब बीमारी की तरफ जा रहे हो, एंड वी डोंट लिसन. एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस कि हाँ ऐसा होता है, हम टालते जाते until and unless we are so much sick that we don't think that we should be working for our body. Yes, of course, community help जो हमें अभी आ रही है, we all need it. So build up various positive stresses we have. So all these we will be dealing. One thing more before ending up today's session, I would like to say, yes, we are not a doctor. And this line again I have taken from one of my friends, and he said, हम डॉक्टर तो नहीं हैं, पर योग के माध्यम से और सकारात्मक सोच के माध्यम से जो कुछ भी हम कर सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वो हम जरूर करेंगे. So in other 2 days also हम इन बातों का ध्यान रखेंगे that yes, we are not a doctor, but we will do whatever we can do to combat COVID-19. Okay, so I think I should stop here. Thank you so much, and I'm really very sorry for some of the technical issues that happened, and I'm hopeful that next day it won't happen. Thank you so much again, Father Johnson and entire team of Price College. Okay, thank you, Pratima ma'am. So it's over for today, and thanks to all the participants who participated actively in this session, and those who didn't attend this particular session with Zoom. So we will upload our video on YouTube channel, and we will share the link on 11:30 or 11:45. You will get the video on YouTube channel. Thank you so much, everyone. Augustine sir, we can end now.